read the question. Which of the following is not a characteristic of stratified random sampling? थोड़ा पढ़ते बेटा. This says stratified random sampling. What is stratified random sampling? क्या होता है stratified random sampling? So in stratified random sampling, we create stratas. What is a strata? Basically, a strata means that you go ahead and you take a population and you divide population in different groups. अलग अलग ग्रुप में इनको हमने डिवाइड कर दिया such that these group are based on some characteristics. मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी पॉपुलेशन हो गई स्कूल स्टूडेंट्स and I have divided them on the basis of their class. So suppose I say this is class 12th, class 11th, class 10th, and class 9th. So I have divided my population based on a characteristic, और ये characteristic है कि वो बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं. So group 1 represents class 12, group 2 represents class 11, group 3 represents class 10, and group 4 represents class 9. Then each group is called as a strata. Each group is called as a strata. Is that part clear बेटा? ठीक है. उसके बाद क्या करते हैं, एक बार हम स्ट्रैटिफाई कर दें, मतलब एक बार हम ये ग्रुप क्रिएट करते हैं, देन वी हैव रैंडम सैम्पलिंग डन. सो सपोज बेटा इन दिस ग्रुप देयर आर 100 क्लास 12 स्टूडेंट्स, 80 11th स्टूडेंट्स, 70 क्लास 10 स्टूडेंट्स एंड 120 क्लास 9 स्टूडेंट्स. ऐसे हमने ग्रुप क्रिएट कर दिया. देन आई वांट टू क्रिएट अ रैंडम सैंपल. सो मतलब इसमें से मैं रैंडमली 10 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लूंगी. 10. When I am randomly selecting students, I am making sure कि मैं हर strata से random selection करूं. Then it becomes stratified random sampling. So random sampling is part of the sampling process. Yes, इसमें हम random sampling कर रहे हैं, इसमें हम randomly select कर रहे हैं हर strata से. So ये statement तो true statement है. This is a true statement. Then read the next part, beta. The population is divided into group of units which are similar on some characteristic. हाँ, जो भी हम यहाँ पे groups create कर रहे हैं, whatever groups we are creating, they have some similarity. They are similar on some basis. So this statement is also true. The strata are based on the facts known before sample is selected. Yes. ये फैक्ट क्या था कि इनके बीच में एक कॉमनैलिटी है कि ये एक ही क्लास को बिलोंग करते हैं बच्चे. आई नो दिस फैक्ट दैट ऑल दीज 100 स्टूडेंट्स आर फ्रॉम क्लास 12th, all these 80 students are from class 11th, all the 70 students are from class 10. So I know this fact, right? I know this fact before I am selecting my sample. So this is also true. ये true statement है. हाँ बेटा, read the next statement. Every possible subset of population of the desired sample size has equal chance of being selected. This is not true. क्या हर possible subset के equal chances select होने के ना? यहाँ पर ये जो ग्रुप था इसमें 100 स्टूडेंट्स थे, इसमें 80, इसमें 70, इसमें 120. सो टोटल जो मेरी पॉपुलेशन है बेटा 100 प्लस 80 प्लस 70 प्लस 120 की है. So इसके chances और इसके chances equal नहीं हो सकते because the population size, because the strata size is not the same. So this statement is false. And आप elimination method से भी कर सकते हो. You can see via the method of elimination that my first 3 statements are true. So my 4th statement is in fact a false statement. Clear? Okay, beta. Thank you.